हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के सेकंड पेपर जिसको मैनेजमेंट या फिर केमिकल प्रोसेस इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से भी जानते हैं, उसके 4 साल के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स पूछे जाते हैं। आपका स्वागत है हैशटैग स्टडी पॉइंट पे। और स्टार्ट करते हैं 2015 के क्वेश्चन पेपर से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट, गिव एडवांटेज ऑफ पैकिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, राइट द सम एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज़ बुक ऑफ अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर product developments. What is innovations. Write the characteristics of entrepreneurship. Short type के question. What type of factor involved in project cost estimate. Write note on time, value of money, equivalence. Next, what do you mean about profitability criteria. Next question है write criteria for principle of product selection. Next, write notes on plant layout for the project. Next, write difference between market and marketing. Next, what is optimum batch size. What do you mean about choice of technology. Next, what are important provisions of factory act. Next, what is special scheme for technical entrepreneurs डेवलपमेंट्स। इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन इसके 15 नंबर के होते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट है राइट द मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। Discuss the problem solving approach. What is sickness in small scale industries. Write their remedial measures. What do you understand by financial institutions. Discuss their procedure and incentives. Write short note on any 2 of following: partnership act, financial ratio, quality control, break even points। ये आपका था 2015 का क्वेश्चन पेपर। अब 2016 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स क्लियरली। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इक्विवेलेंस, प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंसेंटिव ऑफ फाइनेंशियल institution, SWOT, past sale service, licensing of small scale industries, financial ratio, impact of climate change on industry in India। सेक्शन बी में, सेक्शन बी के क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का व्हाट आर द फैक्टर इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स estimation. Describe a method for estimation of capital investment. What are the element of cost accounting. Explain clearly and discuss logically। Next question है discuss the various factor controlling the industrial cost. Comment on their significance। Next question है describe in detail the importance aspect of marketing, emphasizing upon the pricing policy and the profitability outlook। Next question है illustrate some special scheme for technical entrepreneurs development with reference to demand, resource and service based exposure। Next question है sketch down a plant layout and process planning for selected projects। Next question है what are the main requisites of an industry's
projects. Discuss the significance of energy and its utilization in an industry project. Next question है creativity and innovation along with men, material and machine are the factors of an industry. Comment on this statement categorically. Next question है what are the objective for testing of industrial project? How do the quality control and assurance help in the industrial growth? Next question है what are the reasons which successively render a small scale industry sick? Suggest some remedial measures for such sick industries. Section C के question what are the ways and mean to creative the investment case for an industry? What are the precautions in order to make a balance between the industrial case and the interest? Next question है how does the production scheduling control the industrial profit? Mention some fruitful suggestion to optimize the industrial cost. Next question है what are the characteristics of entrepreneurship? Discuss in detail its need and prospects. Next question है what do you mean by depreciation in industrial economics? How is it determined? अब 2017 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे. Write the full name of 3 type of pricing policies. Give the classification of market. Write the full name of BEP. Write the name of 2 method of depreciation. Write the full name of STED. Write the name of function of management. What is planning? What is role of wholesaler in marketing? Name of the MS. What is significance of planning? Section B के questions what is distinction between market and marketing? Describe the concept of registration. Write short note on nature of planning. Write short note on planning and decision making. Next question है what do you mean by trade channels? Next what is pricing policies? What is break even point? How do you calculate the depreciation in the light basic factor? Next question है write short note on resource management. Next write short note on tools and significance of advertisement in the industrial world. ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बीकॉम की मार्केटिंग की बुक में उपलब्ध हैं. किसी के आसपास या किसी के फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बीकॉम का स्टूडेंट हो तो वो उससे कांटेक्ट करके इन सभी के नोट्स मिल सकते हैं ईजिली. सेक्शन सी के क्वेश्चंस डिफाइन मार्केट एंड मार्केटिंग. डिस्कस मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट of local and global development. Discuss about selection and safety on the basis of man, machine and material. What is plant location? Explain in detail the various factor influencing plant location. What do you mean by channels of distribution? Describe the common channels of distribution for the industrial goods. Next write short note on cost oriented pricing, demand oriented pricing, competition oriented pricing. अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे. और आप सब लोग तो जानते होंगे 2000 में तो पेपर हुए ही नहीं है कोरोना की वजह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के. इस कारण से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का 2020 का पेपर उपलब्ध नहीं हो पाया है. 2019 के क्वेश्चन पेपर what is break even point? Write classification of goods. Write short note on business oriented job. What do you mean by industrial physiology? Write the role of ultimate consumer. What is cost capacity? Write the full name of SWO2.
what are business organization, write the function management, what is partnership. Section B के questions. Discuss about significance of planning, describe packaging and advertising. Next है, what do you understand by profitability criteria, write in brief about organizing and directing, discuss about visual aids of plant layout, describe in brief the production scheduling, write short note on after sale service, give an account of depreciations. What do you mean by sickness in small scale industries and their remedy? Write in brief listening and registration in industries. Section C के questions. What is channel of distributions? Describe the following: manufacturing, consumer channels, manufacturing agent, wholesaler, retailer, consumer. What do you understand by the term depreciation? What are the main cause and functions of depreciations? Describe detail in sickness in small scale industries and their remedial measures. What is plant layout and describe its main objective in details. Write short note on any three of the following: Factory Act, SWOT techniques, what is profitability criteria, role of planning in enterprises. बस इतने ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो पाए हैं और इन सभी के सॉल्यूशन मार्केटिंग बीकॉम की या एमकॉम की मार्केटिंग बुक में मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.